Hello dear students, very good morning to everyone. Today we are going to discuss about a very new concept, very important concept, that is called skew lines, and to find its shortest distance between these two skew lines. Okay, first of all we define what is skew lines. In earlier classes we have discussed about equation of a line in space passing through a point and parallel to a given vector, and another we have find the equation of a line joining 2 points, joining what? 2 points. Okay, and now we are going to discuss about what is skew lines and what are its shortest distance between this. There are two form of lines, one is vector form, another is what? Cartesian form. Though there will be two formula for finding shortest distance between two lines, one is vector form, another is what? Cartesian form. तो ये सारी चीज़ हमें डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन होती है एग्ज़ाम में, तो आप समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यू लाइन्स. Here I have written a particular statement. Two lines which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. Neither parallel nor intersecting. Before that you have to know about what is parallel lines and what is intersecting line. Suppose this is a particular plane. Okay, in this particular plane what type of lines we can draw? If I say this is a line and if I say another line, so there may be intersect. Okay, or if a line this is, then another line is this. These are all line in space. Okay, but lies on a particular plane. स्पेस में है और कोई एक लाइन कोई एक प्लेन के ऊपर है. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर है. So this is your particular plane, suppose in space, and in this plane there are two type of lines I have drawn. One is intersecting line and one is what? Parallel lines. These lines are not skew lines. These lines are not skew lines because they are parallel and they are what? Intersecting, right? They are parallel and intersecting. Now if I take two planes, suppose this is one plane and I am taking somewhere else another plane. Okay, somewhere else another plane in space. This is a particular plane in space and another plane in somewhere else in space. And if I draw two lines into different planes, suppose I am drawing a line in this particular plane. Okay, I am drawing a line in particular plane and another line I have drawn in another plane. Okay, another plane. Then what will happen? Both the line will be what? Never intersect and never to be parallel. दोनों अलग अलग प्लेन में हैं तो दोनों को भी मीट नहीं कर सकता और दोनों पैरेलल नहीं हो सकता. Such type of lines are called what? Skew lines. That means skew lines lies in a different plane and they are what? Neither parallel nor intersecting lines. आपको समझना ज़रूरी है. तो और एक थोड़ा सा इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है. सपोज दिस इज़ ए पर्टिकुलर प्लेन एंड इफ़ यू इमेजिन अनदर प्लेन, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए और इसके बाद आप दोनों प्लेन में दो लाइन खींचिए. ड्रॉ टू लाइन्स एंड इमेजिन ए डिस्टेंस बिटवीन दैम. इमेजिन ए डिस्टेंस बिटवीन दैम. डिस्टेंस हो सकता है, इधर एक प्लेन है, देयर विल बी ए प्लेन एंड दिस इज़ अनदर प्लेन. तो दोनों प्लेन के बीच देयर इज़ टू लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और दोनों लाइन के बीच क्या होगा? एक डिस्टेंस हो सकता है एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? दोनों लाइन के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. ओके, ये जो सपोज इफ आई ड्रॉ ए लाइन दिस इन वन प्लेन एंड आई एम ड्रॉ ए लाइन दिस इन अनदर प्लेन. मैंने ये दो लाइन एक ही प्लेन में ड्रॉ किया, लेकिन आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा. यू हैव टू इमेजिन दैट दिस इज ए लाइन इन वन प्लेन एंड दिस इज ए लाइन इन अनदर प्लेन, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो यू टू डिफरेंट प्लान एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, मुझे यही जो ग्रीन बोर्ड है उसको यूज़ करना है टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड यू शुड इमेजिन इट. इमेजिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आपको क्या करना है? ये एक लाइन है स्पेस में और एक प्लेन के साथ इन ए पर्टिकुलर प्लेन एंड दिस इज अनदर लाइन इन ए डिफरेंट प्लेन एंड देयर विल बी ए डिस्टेंस व्हिच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स. लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं ये. सपोज दिस इज P, दिस इज द लाइन L1 and this is the line L2 and this is the point P and this is what? Q. Okay, we know that a line can pass, a line can
passes through a point with position vector suppose a1 and parallel to some vector b1, another line L2 passing through a point what a point with position vector a2 and parallel to some given vector. So suppose that this equation in vector form is what line का equation क्या है, r vector equal to what a1 vector plus lambda into what b1 vector. This is the equation of this line, and equation of this line is suppose L2 is what r vector is equal to a2 vector plus this is mu, okay, mu into b2 vector. Okay, these are the two lines in space, and both the lines are skew lines, and both the lines lies in a different plane. They are not intersecting, they are not parallel. Okay, and this PQ is perpendicular to L1 as well as what there is a L2, and that PQ is called what shortest distance. It is in shorthand shortest distance SD between what L1 and L2. L1 and L2 जो लाइन है उसके बीच जो डिस्टेंस है ये सबसे छोटा सा डिस्टेंस है. डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है बिटवीन देम, देयर विल बी अ डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस होगा. एंड अमॉन्ग दिस डिस्टेंस वन डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन L1 and L2, such type of distance are called what shortest distance. This is called SD. In short, it is written as what shortest distance. In this case, PQ is the shortest distance. Now, if the line is in vector form and vector form, then what will be the shortest distance between two lines? Let us I am not going to derive it. You have gone through it. You can go to the text, any text you will get the derivations. Please go through this. So just I am focusing on what is the shortest distance. Yes, shortest distance क्या है, and what is actually its results, and how can apply it in solving the questions. Okay. So to find that is the derivation of shortest distance, you go through the there is any text, your NCERT textbook is there or other reference book is there, and you go and check once. Okay. So about shortest distance I have discussed, about skew lines I have discussed. Now what is the shortest distance between two lines, okay, which are lies in a different plane? They are skew lines, and try to find and try to write in vector form. Okay, first we use what vector form. Okay, shortest distance between two lines in vector form. Okay, so suppose that a line L1 whose equation is r vector equal to what a1 vector plus lambda into what b1 vector. Okay, another line is L2 which is r vector equal to what a2 vector plus mu into what b2 vector. These are the two lines in vector form, and SD between these two lines is given by the formula a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 divided by, इसका मैग्नीट्यूड देना है, divided by b1 cross b2 magnitude. Okay, understood? There is a dot product between this. If you use this particular results, you will find this is the SD between two lines. This result shows what SD between two lines. Shortest distance between two lines can be calculated in vector form by this, using this particular result. Okay, now from here we can say that very important if I say there is a shortest distance between two lines is 0, then what you understand? We already told you that SD between two lines is a particular line which is perpendicular to both, that is L1 and L2, right? And both the line L1 and L2 are lies in two different planes. And when I say the distance between, shortest distance between them is what 0, if I say this is shortest distance between them is what, क्या है 0 होगा, तब क्या होगा उस लाइन उस प्लेन के अंदर जो लाइन है, दोनों लाइन आके क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. एंड फाइनली व्हाट हैपन, both the lines will lie on a particular plane.
एक ही प्लेन में आ जाएगा। पहले क्या था, डिफरेंट प्लेन में था, और फाइनली उनके बीच क्या था, ये डिस्टेंस था। और इसके बाद क्या हुआ, दोनों का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट एच डी क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का मतलब है दैट मीन्स बोथ द लाइन लाइज ऑन द सेम प्लेन, बोथ द लाइन लाइज ऑन द सेम प्लेन में आ गया है, ठीक है। दैट मीन्स वेन एवर वी say HD between them is what, 0, you understand physically or you can visualize that both the line lies on a same plane। जब सेम प्लेन में आ जाएगी दोनों लाइन, उसका HD क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो if I say SD equal to 0, then you understand both the lines lies on the same plane। lies on the same plane means what, co-planar, it can co-planar, एक ही प्लेन में है, ठीक है। whenever I say lies on the same plane, you have to understand it is what, co-planar, right। जब दोनों लाइन क्या होगा, सेम प्लेन में आ जाएगी, तो दोनों लाइन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है पैरेलल हो सकता है, या दोनों क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है कि नहीं। सेम प्लेन में आ जाएगा तो क्या हो, दोनों लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अंडरस्टूड। तब जाके क्या होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो आप कह सकते हैं, इफ़ आई से टू लाइन इन स्पेस आर इंटरसेक्टिंग, इफ़ आई से टू लाइन्स इन ए स्पेस आर इंटरसेक्टिंग, then indirectly you have to understand both the line lies on the same plane, both the line lies on the same plane and their shortest distance is what, 0। so when we say both the lines are intersecting, indirectly you have to mean that it is what, coplanar, and SD is equal to what, 0, SD is equal to what, 0। another way, the lines are no doubt parallel, लेकिन एक ही प्लेन में आने के बाद सेम प्लेन में आ गया, उसका SD क्या हो गया, 0 हो गया। SD was reduces and becomes what, 0, but they are parallel, they have a some distance, this distance is called distance between two lines, not a shortest distance। shortest distance is different things and distance between two line is different thing। ये दोनों लाइन क्या है, एक ही प्लेन में है, दोनों का SD क्या है, पहले वाला लाइन क्या था, अलग प्लेन में था, तो उस दोनों लाइन आके एक ही प्लेन में आ गया, तो इसके बाद क्या हुआ, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हो गया। बट इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, they are coming in the same plane and they are parallel, they have some distance, it is not the shortest distance। you should not be confused that this is the shortest distance between two lines। shortest distance between two lines is the line is the distance perpendicular to both the lines, and the line must be lies in a different planes, and when both the lines are in a same plane and they are parallel, they have some distance, but this distance is not called shortest distance, yes। and when the two lines are intersecting, then their shortest distance also 0। when two lines are parallel, they are also what, their shortest distance is also 0, because you have gone through the skew lines। skew lines का definition क्या है कि they are not intersecting, they are not parallel, okay, and then we get a shortest distance, and when they are parallel, they are not called skew lines, they are in the line in a space and they are in what, in a same plane, they are in what, same plane। और same plane में जो आएगा तो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। एंड डिराइवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज इट इन योर टेक्स्ट, it's a lengthy process, I am not going to waste time, and please go through this, you can easily understand, and we use this, we can find the shortest distance between two lines। now SD is equal to 0 means what, both the lines are coplanar, that means दो लाइन coplanar होने का कंडीशन क्या है, SD 0 होना चाहिए। SD 0 होने का मतलब क्या है, this particular quantity becomes what, 0। this is 0 means what, that is you can write two lines are coplanar। कोप्लेनर लाइंस क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, बीच में इंटरसेक्टिंग लिख के रखो, ओके। इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर कोप्लेनर मीन्स SD इक्वल टू 0,
SD equal to 0 means what? This right hand side is equal to 0. If you cross multiplying, then you will get modulus of this quantity equal to 0, and modulus of anything is 0 means what? X equal to 0. ठीक है, तो ये क्रॉस करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये रहेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0, एंड फाइनली द इनसाइड पार्ट ऑफ द मॉडुलस विल बी 0. दैट इज प्लानर. कंडीशन क्या? टू लाइन्स आर कोप्लानर इफ व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज व्हाट? A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 is equal to 0. This is very very important, beautiful results. Okay, so whenever you find this type of result is equal to 0, then from here you can conclude that both the lines are what? कोप्लेनर. बिकॉज लाइन से आपको क्या मिलेगी? A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर. अगर दो लाइन आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि यू हैव टू शो दैट बोथ द लाइन्स आर कोप्लेनर और बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो आप क्या करेंगे? आप A1, A2 एंड B1, B2 निकालेंगे, और इसके बाद A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे, इसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालेंगे. जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट वी हैव फाइंड. In this way we have to find, then take dot product, and after taking dot product if you get 0, then you can finally conclude that both the lines are what? Coplanar. Both the lines are what? Coplanar. This is the condition of two lines are what? Coplanar. Okay. We are going to find the shortest distance between two lines in Cartesian form. Earlier we have discussed about the shortest distance between two lines in vector form. Now we are discussing about Cartesian form. We know that the Cartesian form of the equation of lines are what? X minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, and z minus z2 by c2. These are the lines. We already know this is the standard form of equation of lines in Cartesian form. Okay. Now this particular line can be reduced into vector form. उसको vector form में लिखेंगे तो क्या होगा? It will be r vector equal to a1 vector plus lambda into b1 vector. Now what is A1 vector and A2 vector? This is important. A1 vector कहाँ से आएगी? ये पॉइंट से आएगी. ठीक है, लाइन कौन सी पॉइंट से पास हो रहा है? x1, y1, z1. तो A1 vector क्या होगा? A1 vector will be what? That is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. And what will be A2 vector? A2 vector will be, the line is, this is A2 vector, this vector form is what? It is passing through this a point with position vector what? A2 vector. और कौन से पॉइंट में पास हो रहा है? x2, y2 and z2. Okay, z2, right? x2, y2, z2. Then A2 vector क्या होगा? x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. These are A1 vector and A2 vector. And what is B1 vector? B1 vector is parallel to this line. What is the direction ratio of the line? A1, B1 and C1. So B1 vector क्या होगा? A1 I cap plus B1 j cap plus C1 k cap. So therefore B1 vector is equal to A1 I cap plus B1 j cap plus C1 k cap. And B2 vector is equal to, similarly B2 vector is what? B2 vector is also what? Parallel to this particular line, and therefore B2 vector can be written as what? A2 I cap plus B2 j cap plus C2 k cap. Right? You can easily write it. Okay. Now what is the SD between two lines in vector form? Vector form में SD क्या था? SD was, what is the SD? A2 vector minus A1 vector dot इसमें डॉट है B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. ओके, और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा. दिस इज योर shortest distance between two lines in vector form. Now reduce into Cartesian form. What we have to know? We must know about what? This vector and this vector. Now what is A2 vector minus A1 vector? A2 vector minus A1 vector क्या होगा? x2 minus x1 I cap. Okay, then y2 minus y1 z cap, and then z2 minus z1 k cap.
right? And now we are going to find that is B1 cross B2 vector. B1 cross B2 vector is what? By using that is a cross product of two vectors, that is vector product. Okay, you see that is B1 cross B2 is what? It is the determinant. First row is I cap, j cap and k cap, and second row will be the component of first vector a1, b1, c1, and third row is component of second vector b2. This is the component, and if you expand it, you will get I cap into this minus this into this, I cap into what? b1 c2 minus b2 c1. The b1 c2 minus b2 c1 into what? I cap, right? Minus j cap into a1 c2 minus a2 c1. So expansion of determinant into j cap, and finally k cap into a1 b2 minus a2 b1 k cap, right? Okay, this is your b1 cross b2. Now let us try to find what we know that in numerator is what? a2 vector minus a1 vector dot this, uska dot nikale. So you have to find a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 vector. दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? corresponding components will be what? Multiplied. So इसमें क्या होगा आपका b1 c2 minus b2 c1 into what? x2 minus x1. डॉट प्रोडक्ट आपको पता है. सिमिलरली दिस किसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो z डॉट j इक्वल टू 1 दिस इंटू दिस. सो माइनस a1 c2 minus a2 c1 into what? y2 minus y1. Okay, and finally what happened? This dot this, और इस दोनों के बीच मीन्स k डॉट k इक्वल टू व्हाट 1 एंड दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू z2 minus z1, right? Very interesting result is that in this particular determinant, you see, if you after expanding this you are getting this, okay, and after taking dot product between these two, you see this expression, there is a similarity between this expression and that expression. Only the thing is that in this expression what happened? I is replaced by what? x2 minus x1, and remaining are all same. J is replaced by what? y2 minus y1, remaining are same. And k is replaced by what? z2 minus z1, and remaining are same. So therefore this particular expression can be written as we can write like that. First row we can write I, j, k are replaced by what? x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, right? And second row and third row will be remain same because these are already remain same. So it is what? a1 b1 c1, this is a2 b2 and c2. Okay, finally this is the determinant. Okay, so numerator becomes what? This is the determinant. How you get the determinant? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ये x2 x1 y2 y1 ये कहाँ से मिलेगी? लाइन के ऊपर, लाइन जो पॉइंट में पास हो रहा है ये पॉइंट पहले निकाल दीजिए, इसके बाद x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकाल लीजिए. और व्हाट इज a1 b1 c1? a1 b1 c1 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड लाइन, राइट? तो आपको न्यूमरेटर मिल गया है. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर
B1 क्रॉस B2, ये तो B1 क्रॉस B2 है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड होगा ओके ऑल्सो B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो आपका क्या मिलेगी, B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी, A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर एंड फाइनली A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गया। तो आपका SD क्या है, दिस इज योर SD। ओके, पुटिंग द रिजल्ट इन SD you will get the Cartesian form. So therefore SD equal to SD is equal to what is the numerator? Numerator is the denominator what? This denominator what? X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1, and second row is what? A1, B1, C1, A2, B2, C2. Complete the determinant and determinant के ये जो डिटर्मिनेंट, ये तो डिटर्मिनेंट है, उसके ऊपर मॉडुलस साइन है, तो राइट ए मॉडुलस साइन हियर बिकॉज वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट मे बी व्हाट नेगेटिव ऑल्सो। डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के बाद आपका वैल्यू नेगेटिव निकल सकता है, तो डिस्टेंस इज व्हाट नॉट ए नेगेटिव नंबर, इट इज़ ए पॉजिटिव, सो टेक मॉडुलस साइन। एंड नीचे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड वाज B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर प्लस फाइनली A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मेमोराइज करने का आपका ज़रूरत नहीं, जब SD आप निकालेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगी। डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करें तो आपको क्या मिल रहा है, B1 C2 माइनस B2 C1, तो ये फिगर आ जाएगा। देन A1 C2 माइनस A2 C1, तो ये फिगर आ जाएगी, तो उसको खाली होल स्क्वायर करना है, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये फिगर आएगा, तो उसका होल स्क्वायर करना। आपको मेमोराइज करना है कि मैंने उसको एक्सपांड करते डिटर्मिनेंट जब एक्सपांड करूँगा उसमें जो रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। रिजल्ट को क्या करना है, स्क्वायर करना है। So this is the SD between two lines in Cartesian form. Okay. Now, if two lines दोनों लाइन अगर कोप्लेनर हो, कोप्लेनर होने से क्या होगा, देन कोप्लेनर होने से क्या हो जाता है, SD और SD इक्वल टू 0। एंड कोप्लेनर का मतलब क्या है, इट मे बी ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। SD इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये नीचे वाला क्या होगा, आके 0 हो जाएगी, एंड क्या रहेगा, दिस डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ D इक्वल टू व्हाट, सपोज 0, देन फ्रॉम हियर वी कैन से D इक्वल टू 0। कोई भी आई एम सॉरी, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट, राइट। एंड मॉडुलस ऑफ D इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, D इक्वल टू 0। तो ये मॉडुलस ऑफ पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट 0 एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस इक्वल टू व्हाट 0 एंड फाइनली यू गेट what, determinant equal to what, 0. The determinant is what, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 divided, and second row is what, a1 b1 c1, a2 b2 c2. Okay, this is equal to what, 0. Understood? So finally what we get, this is the condition that two lines are what, coplanars. It's very, very interesting. I have discussed about shortest distance between two lines, skew lines,
also define skew lines, and then also discuss about shortest distance between the lines in vector form as well as Cartesian form and their corresponding condition of how two lines becomes what? Coplanar. Okay, coplanar. And when two lines are coplanars, means they are intersecting, they may be parallel. Okay, in such cases SD is equal to what? 0. Okay, so this is the particular discussion of the topic. So I conclude here, and in the next class I will discuss few questions related to what? Shortest distance. Okay, so thank you very much, all the best.